Good morning, sir. Okay, so as we discussed, we are going to start with the chapter of oscillations theory. First, I'll be discussing some important formulae, and then we'll be doing some sums today. And if it doesn't get over, I will be continuing that same thing on Wednesday also. Okay, so that will be the case. You can open to your digest page number 167. Page number 167. Okay, so the name of the chapter is Oscillations, and it is the chapter number 5 of your digest. It is the chapter number 5 of your digest. Pay attention. Important formulae. First and the most important formulae about simple harmonic motion is F is minus kx. F is minus kx. What does F stand for? If you know, F stands for the restoring force. K is called as the force constant, and x stands for the displacement. So F is the restoring force. As we have discussed in our videos also, that if there is a spring and you attach a mass over here and you just pull it by a displacement of x. So when you pull it by a displacement of x, the mass is going to come here. The spring will be extended by a displacement x, and because of that there will be an internal restoring force which is generated in the spring, and that restoring force ka formula is F is minus kx. Okay, always remember this is the identity of simple harmonic motion. Means if you go to a college, you have your identity card, right? That you belong to this college, you belong to this group. Okay, वैसे ही which type of motion does a body belong, and if it belongs to the SHM category, simple harmonic motion category, it should obey the formula F is minus kx. Means if F is raised to 1, x will also be raised to 1. A linear function. Means if I tell you the graph of F versus x, be somewhat this way. Slope will be minus k if you remember this. Okay, it will be y is mx plus c ka group which is there. Second thing which is very important is acceleration in SHM.
Acceleration in SHM is minus omega square x, which I have proved. This is acceleration in SHM. This is omega square, which omega is called over here as angular frequency. X is the displacement. Where what is omega square? What is omega square? If you remember, omega square is k by m. Or if I told you k is m omega square, if you have seen the videos, k is m omega square, or omega square will become k by m. ओमेगा का नाम is angular frequency. This is angular frequency का square. Fourth, differential equation in SHM. So there is a differential equation which defines simple harmonic motion, that is oscillation. Is d2x upon dt square plus kx upon m is equal to 0, which could also be written as d2x upon dt square. K by m is omega square. X will become equal to 0. This was proved in your videos. d2x upon dt square plus kx upon m is equal to 0. Fifth concept which comes from here. So acceleration I have proved, I am writing it again. Acceleration is minus omega square x, same thing. Now we know one thing, that in simple harmonic motion, this is x0, this is x is plus a, and this is x is minus a. Mean position, right extreme, left extreme. But if I put x0 over here, acceleration at this point, that is mean position, will be 0. यहाँ पर the acceleration will become minus omega square a, means acceleration is directed in this direction. यहाँ पर the acceleration will become plus omega square a because you're putting x is minus a. That means it is directed this way. So we know that acceleration is always directed towards a fixed position called as the mean position. Okay, so this is the formula for acceleration used in simple harmonic motion. In terms of x, and acceleration is always directed towards a fixed position called as the mean position. That's why actually the minus sign is there. Okay, 6th point. This was acceleration in SHM. I'll write it over here. Acceleration in SHM. Acceleration is not constant, it's changing. Similarly, velocity in SHM. V का formula is omega under root a square minus x square. This is velocity in SHM. So if I make the summary of this thing, x0, x plus a, x minus a. If I put x0, velocity will become omega a. यहाँ पर velocity will become 0. यहाँ पर also velocity is 0. Actual formula for velocity in SHM is plus minus omega under root a square minus x square. So velocity at this point will become plus minus omega a. Plus omega a मतलब particle का motion is this way, and minus omega a means particle का motion is this way. So it could be going that way also towards the right extreme, and left extreme की तरफ also it could go. That is velocity in simple harmonic motion. Now these two equations which are there, that is a is minus omega square x and v is omega under root a square minus x square. These two equations are termed as displacement equations. Why, sir? Because they are in terms of x.
देखो ना x है ना दोनों में, so they are in terms of x, therefore they are called as displacement equations of SHM. I hope you all must have seen the videos. So in the videos everything is specified clearly how they are proved and everything. We need to write it down so that you all can understand. I'll go to the next slide which is there. If you want to take screenshot, or it is given on page 167 of your notes, that is digest. Everything is given, so we need not, you can refer to that thing only directly. Similar thing which I will tell you, this was the 6th point. Now I'll deal with the 7th point. I'll deal with some equations called as time equations in simple harmonic motion. So we know that first equation is x is a sine omega t plus delta. This is the time equation because it is a function of t. इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, that will be omega a cos omega t plus delta. एंड इसके फिर से एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, which will become minus omega square a sin omega t plus delta. You all know all the basic stuff which is there. So these were all time equations in SHM. So I'll call this as time equations as a function of t. So whenever in the numericals they give you time related questions, तो हमको ये equations use करना है. And whenever in the numericals they give you displacement related questions, you have to use displacement equations. तो इसमें ही और थोड़ा डिस्कशन करते हैं. इस टर्म को ओमेगा टी प्लस डेल्टा जो टर्म है उसको कहते हैं फेज ऑफ SHM. I'll denote that by phi is omega t plus delta. It's called as phase of SHM. What does phase tell you? What does this term tell you? What this term tell you? It gives you the position of the particle performing SHM. ये फेज आपको बताएगा पार्टिकल कहां पर है एट टाइम टी. एट टाइम टी कहां पर पार्टिकल है, मतलब इफ आई टेल यू एट टाइम टी पार्टिकल यहां पर है, वी नो वी हैव स्टडीड इन द वीडियो, यहां पर 5 विल बिकम 0. इफ एट टाइम टी की बात हो रही है, यहाँ पर टाइम टी की बात हो रही है, टाइम टी पार्टिकल यहां पर है, टाइम 0 नहीं है, टाइम टी कुछ समय बाद 5 विल बी 0. अच्छा पार्टिकल इधर है तो 5 विल बी 90. पार्टिकल इधर है फिर से, ये तो 50 मीन्स यहां पर है और इधर जा रहा है. Phi is pi by 2 and at the next instance suppose it is going here, फिर से पार्टिकल इधर है एंड इधर जा रहा है, so phi will become 180. पार्टिकल यहां पर है और नेक्स्ट इंस्टेंट पर इधर जाने वाला है, so phi will become 3 pi by 2 all radians. Okay, तो आपको पता चलेगा कि पार्टिकल कहां पर है. वी आर स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ अ सर्कल. If you relate this with a circle, you know the reference circle method which I have told you. We started from here. We said that यहाँ पर phi is 0, यहाँ पर phi was 90, यहाँ पर phi was 180. Please watch the videos if you have not seen. यहाँ पर phi is 3 pi by 2 and then it is 2 pi. We start from 0 again. This method is referred as reference circle method, which we have done it. Okay. वीडियोस देखना जरूरी है, इसके बिना आपको समझ नहीं आएगा. You can see it again. I have sent you the link. You'll have the link to the website also. So everything is there with you all. Please watch the videos. Without that, it will not be possible. So this is phase. अच्छा इसमें एक term है delta. Speaking about this term, नहीं, this called as initial phase. Delta. ये जो term है delta.
डेल्टा का एक्चुअल फॉर्मूला इन द डेरिवेशन इज साइन इनवर्स ऑफ x naught by a. What does it give you? It gives position of particle at time 0. ये पूरा चीज क्या देगा? ये पूरा चीज आपको देगा पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, कुछ समय बाद, टाइम t 2 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद. बट इनिशियल फेज आपको क्या बताएगा? डेल्टा आपको क्या बताएगा? ये आपको क्या बताएगा? ये आपको बताएगा पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम 0, कहां से शुरू हुआ पार्टिकल, वेयर द पार्टिकल स्टार्ट्स परफॉर्मिंग SH. I hope you all have understood. कोई इतना हार्ड नहीं है. Okay, starts performing SH, starts. And ये फाइ आपको इंफॉर्मेशन देगा कि पार्टिकल कुछ समय बाद, कुछ इंस्टेंटेनियस टाइम बाद कहां पर है वो. You understanding what's happening? Okay, तो कहां से शुरू हुआ, टाइम टी बाद कहां है, और नेक्स्ट इंस्टेंट पर कहां जाएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. मतलब इनिशियल फेज अगर मैं कहूँ टाइम 0 की बात, अगेन द सेम थिंग. पार्टिकल यहां से शुरू हुआ तो डेल्टा 0 है, यहां से शुरू हुआ तो डेल्टा 90 है, इधर जा रहा है. डेल्टा यहां पर है, इधर जा रहा है, तो डेल्टा विल बिकम पाई. एंड यहां पर है और यहां जा रहा है, तो डेल्टा विल बिकम 3 पाई बाय 2. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. ओके, यू ऑल आर स्मार्ट इनफ. ओके, अंडरस्टैंड. This is the whole concept about phase. Phase plays a very very important role in your simple harmonic motion. कि हमको पता तो लगना चाहिए भाई कहां पर है और कहां जा रहा है. ओके, कुछ समय बाद कहां पर है वो. तो दिस इज ऑल denoted in terms of reference circle method, which you all can understand by looking at the videos. Okay, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. हेलो, are you all understanding beta? Please say yes or no. Can I? Yes, sir. ठीक है बेटा. Yeah, so please pray that if it opens everything, it will become very very easy for everyone. Yeah. Right now the situation is bad. जितना जल्दी खुल जाए उतना ज्यादा अच्छा होगा. You will be getting calls from my office for the meeting. So I'm keeping personalized meeting with each and every student, so that you all can share your whatever feedbacks and everything. So one to one, I'm starting from tomorrow. Initially the need people will start getting calls, then gradually next week आपका turn आ जाएगा. So because I'm taking only 10 persons in one day, like 15-20 minutes per person will be devoting, so that you all can share your feedback. I can also do counseling with you all. It will be a good experience. Okay, so please try to come with your parents and meet me, so that we can share our experiences. What is there, what is your feedback, कैसे चल रहा है आपकी पढ़ाई, क्या इम्प्रूवमेंट है, कैसे करना चाहिए. I will guide you throughout everything. Okay, so please come for the meeting. You will be getting calls from today only. आपको नहीं आएगा, generally NEET वालों को पहले आ जाएगा, because this week I have kept for the NEET people, and next week is for the JE people and the theory people. ठीक है ना? So it will be better. And I think so the vaccine has also come, so by next month everything will start. Generally I have decided कि भाई पहले जो test है will be start conducting in the classes in small groups, 10 12 के groups में you all will come and you all will give the written exams as well as your JE के कुछ exams, कुछ NEET के exams, theory के exams, and then we'll be starting doubt solving, and gradually we'll be starting with all our lectures also. Okay,
आपने तो पढ़ाई करके इस पे देख लिया है. ओके, द इफेक्ट विच person to person is there is totally different comparatively. Okay, yeah, we can have some lectures online also, that doubt solving lectures या कुछ भी, but most effective teaching method is your face to face only, because the personal touch is always there. but ठीक है, situation ऐसा है. Okay, no one can do anything. ठीक है, but हमको पढ़ाई करते रहनी है. Okay, because it is your main important here. Any help, you can speak about it, you can call me up, or any meeting you can meet me and we'll discuss about that thing. ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो हमने इनिशियल फेज के बारे में डिस्कस कर लिया. अब हम आते हैं एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में. सो कौन सी पॉइंट थी ये? दिस वाज द 9th पॉइंट एंड विल बी 10th पॉइंट. देयर आर टू एनर्जीज इन एसएचएम. सबसे पहला एनर्जी वाज काइनेटिक एनर्जी. you know it is half mv square, but v का फॉर्मूला हमने लिखा था प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो उसी में if I put, it will become half m omega square a square minus x square. This was a very important formula. And m omega square was k. So kinetic energy को ऐसे भी लिख सकते हैं half k a square minus x square. This is all part of derivations which I've done. So this is x is 0, x is plus a, x is minus a. Again the same concept. यहाँ पर x 0 पुट करेंगे तो kinetic energy यहाँ पर हो जाएगा half k a square, which is maximum energy. And यहाँ पर पार्टिकल आकर रुक जाता है तो काइनेटिक एनर्जी इज 0 एंड यहाँ पर आल्सो इट इज 0. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इट इज वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ओनली. पॉइंट नंबर 11, द एनर्जी, अनदर एनर्जी व्हिच इज पोजेस्ड इज हाफ kx स्क्वायर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्यों रहता है? बिकॉज द पार्टिकल इज इन मोशन. एंड पोटेंशियल एनर्जी क्यों रहता है? बिकॉज इट इज अंडर द एक्शन ऑफ व्हिच फोर्स बच्चा? रीस्टोरिंग फोर्स. आपको पता रहेगा. जब भी कोई रीस्टोरिंग कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करता है तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कम्स इनटू पिक्चर. आपको मालूम है स्प्रिंग को अगर आपने खींचा तो अंदर से एक रीस्टोरिंग फोर्स आएगा जो उसको वापस लेकर जाएगा. ठीक है भाई, डोंट पुल मी, आई वांट टू गो बैक. एंड दैट कॉन्सेप्ट वी हैव स्टडीड इन कंजर्वेटिव फोर्स. आई होप यू ऑल नो व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स. spring force, gravitational force, electrostatic force, they all come under the category of conservative forces. So जब भी conservative forces के बारे में बात होगी, the potential energy concept will be introduced. बाबा हेलो, इतना बेटा डिफिकल्ट नहीं है. Are you all getting it? What am I speaking? Hello. Yes, sir. हाँ, it is not so difficult which you all make physics. Okay, it is easy only. थोड़े सी स्टार्ट के जो 6 महीना है उसको बराबर से अगर आप बताएंगे फिजिक्स के साथ, तो the whole 2 years will go very smoothly. And if your start concepts are only not clear, then आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. It is not tough. Okay. So potential energy is half kx square. The derivation we have done it in our videos. We know that it will be x is 0, x is plus a, x is minus a. Potential energy यहाँ पे 0 है because यहाँ पर कोई पुलिंग है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा ही नहीं. बिकॉज रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर तो होता ही नहीं है पोजीशन पर. यहाँ पर मैक्सिमम रीस्टोरिंग फोर्स रहेगा बिकॉज मैक्सिमम पुलिंग है. विल बिकम हाफ के ए स्क्वायर. एंड यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अगेन इज मैक्सिमम, विल बिकम हाफ के ए स्क्वायर. यू कैन अंडरस्टैंड बाय लॉजिक ओनली. जहां पर पुलिंग सबसे ज्यादा होगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगा. बिकॉज स्प्रिंग को अगर आप जितना खींचेंगे उतना ही तो एनर्जी स्टोर होगा उसमें. और वी कैन से दैट जहां पर काइनेटिक एनर्जी इज 0, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्स. Because according to law of conservation of energy, I can say that the total energy comprises of ke plus p. Hello. So and total energy अगर दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग तो you know how to do it. It will become half k a square minus x square plus half k x square. तो x square cancel हो जाएगा. Total energy will become half k a square. Hello.
And this, can I say it is independent of x? That means it is, beta, that is, it is what, sir? Constant. Means at every position, the total energy is going to remain the, Baba, hello, please reply. It's going to remain the constant. Yes or no, sir? Achha, this is in accordance with which law? Conservation of energy. Conservation of energy. इतना कुछ hard नहीं है. This also we have done. This also we have done. And इसके बारे में हमने graph भी पढ़ा था. Suppose graph which we have drawn in our videos was, again, x is 0, x is plus a, x is minus a. I know total energy is going to remain the same. This is the graph of total energy. That will become half k square. Potential energy का graph ऐसे होगा. यहाँ पर 0 है, यहाँ पर max है, यहाँ पर max है. This is P and K का graph ऐसे opposite होगा. This graph is again coming in the theory. Hello. Acha, theory batches I am separating. One more thing I need to tell you all just for 2 minutes. HSC batches I am separating. They will be held on Tuesdays, Thursdays and Saturdays. And normal lectures, because HSC वालों को NEET वालों और JEE वालों की जितना पढ़ाई थोड़ी कर रही है, उनको एक लिमिटेड सिलेबस है, तो ओके, उनको अलग से पढ़ाया जाएगा everything, because right now the syllabuses will separate. We go dedicatedly into IIT and NEET, and the theory HSC people will separate from here. They will be doing only whatever is required, because that much only is coming in the examination. What for CET? Hello. What for CET? CET I'll discuss in the, when you come for meeting, beta, I'll tell you what is the CET procedure. Initially the procedure of JEE and CET is going to remain the same only. Later on, when you finish the JEE examination, that is in February, I'll be starting with the course of MHT CET, which will be same as that of JEE also. And then we'll be doing the papers of MHT CET, and CET will be getting clear, because the portion is same as that of JEE. It is not different. Understand what's happening? 11th भी है MHC CET में और 12th भी है. But theory वालों को तो सिर्फ 12th है. So the JEE people have to attend both, na, HSC and JEE. No. HSC will be taught to you in the JEE lectures only. Hello. Okay. I have developed a certain pattern where the JEE people will be taught the same concept, okay, of theory incorporated with DC Pandey. Are you all understanding, beta? Okay. Hello. समझ आया आपको? Yes, sir. क्या कह रहे हैं? Okay, तो आपको भी डबल मेहनत नहीं करनी है, थियरी वालों को भी डबल मेहनत नहीं करनी है, सीईटी वालों को भी डबल मेहनत नहीं करनी है. Rather than attending so many lectures and getting confused, okay, I have worked on a certain method where everything will be very comfortable, okay, and you will be related to your syllabus only properly, okay, rather than attending so many lectures and then getting confused. Are you all agreeing, beta? आपके अच्छे के लिए. ठीक है. Yes, sir. So that will be better only, okay, and ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे. तो टुडे तो थियरी होगा, वेडनेसडे भी थियरी होगा, and then Friday से we'll implement this pattern which is there. So we have developed the 12th formula, 12th question we have done. 12th. Now I discuss the 13th concept which is there, is called as composition of two SHMs. Composition of two SHMs. दो SHM जब मिलते हैं, हमको पता है कि एक SHM जो है x1 is a1 sin omega t plus delta 1. This is one SHM का पहचान, one SHM.
Second SHM, x2 is a2 sine omega t plus delta 2. It's first SHM and this is the second SHM. And when I mix both of them by superposition principle, इस principle को क्या बोलते हैं? Superposition principle, by which I mix both of them. I'll apply the formula which is given in the derivation and I will get x's resultant is a resultant sine omega t plus delta resultant. So a resultant is going to become under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos delta 1 minus delta 2. ये जो a resultant है ना, ये वो ये है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी को याद आ रहा है? इट इज लुक अलाइक विद व्हाट? it is look square alike of, plus q square yeah, very plus good. 2. यही मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए. मतलब दो वेक्टर्स को जब मिक्स करेंगे और दो SHM को मिक्स करेंगे तो वही आंसर आएगा. हेलो बेटा, एवरीवन नोज दिस थिंग, कम ऑन यार. हेलो, इस टर्म को Yes. हम लोगों ने फेस डिफरेंस का नाम दिया. फेस डिफरेंस, ये डेल्टा है ना, इनिशियल फेज है ना ये, या तो इसको हम लोग इनिशियल फेज डिफरेंस का भी नाम दे सकते हैं. ओके, एंड दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. अच्छा, इसमें दो केसेस है, तीन केसेस है एक्चुअली. डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इज 0. तो इधर अगर 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा. तो ए रिजल्टेंट हो जाएगा a1 प्लस a2. यू नो इट, कम ऑन. डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 अगर पाई रहेगा 180 रहेगा तो ए रिजल्टेंट हो जाएगा a1 माइनस a2. एंड डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 अगर 90 रहेगा तो ए रिजल्टेंट बेटा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर. डू यू अग्री विथ मी? हेलो, remember these were three cases of simple what here, parallelogram law. Hello, yes, Yes. okay. Now, अच्छा, इसमें there is delta resultant also, where delta resultant is the resultant phase, resultant initial phase, resultant initial phase of SHM. इसको हम लोग कहेंगे resultant amplitude. Okay, delta resultant का formula if you remember derivation में tan inverse of a1 sin delta 1 plus a2 sin delta 2 upon a1 cos delta 1 plus a2 cos delta 2. Please remember this thing. ये चीज composition of two SHMs में fit होती है. You should know all these things. The sections you should know. इसके ऊपर जो sums आएंगे इसी के ऊपर आएंगे. Okay. I request you all please write these derivations. बेटा अभी जितने भी चैप्टर्स आएंगे ना उसमें याद करने का बहुत कम रहेगा. जैसे आप केमिस्ट्री बैठ के याद करते हो वैसे इसमें याद नहीं करना है. इस हर एक डेरिवेशन को आपको दो दो बार लिखना है. अपने आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा. And that is much easier also rather than sitting and learning the whole day. It is better you see the derivations and you write it down once by seeing it and one while okay practicing it you write it. अपने आप आपको याद हो जाएगा. Okay, and I have sent you the test timetable also. I have kept theory का timetable अलग, then theory plus numericals again different. You get practice, nothing else. Okay. Getting it now बेटा? एंड थियरी का लेक्चर्स हो जाने के बाद एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे एज आई एम डूइंग विद द सीनियर बैच. थियरी पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा सीनियर बैच के साथ. आपका जो सीनियर बैच है
and we are doing again one more whole course of revision of theory. मतलब पूरा जो बुक है ना आपका डाइजेस्ट का, पूरा लास्ट के 6 महीने ही हम लोग फिर से रिविजन कर रहे हैं, every concept, everything, every numericals. Okay, so that is the whole case. Because the revision also plays a very very important role of the same thing. इसके बाद में हम लोग बात करेंगे सिंपल पेंडुलम की. You know, there was a simple pendulum, there is a simple pendulum which you have discussed. ये है ऐसे, ये होता है T, ये होता है mg, ये होता है theta. You know, you are well versed. ये हो जाएगा theta, this will be mg cos theta and this will be mg sin theta. You know it, right? So time period of simple pendulum, I have proved it as 2 pi under root L by G. If you remember, there was another pendulum in this case called as seconds pendulum. Seconds pendulum का time period कितना था? 2 seconds. And the length of the seconds pendulum was G by pi square, which comes up to be approximately 1 meter. Okay, so this was the case. Lastly, I have discussed something called as damped SHM. What was undamped SHM? Where the amplitude of oscillations always remain the same. A is constant. तो अभी जितना भी हमने discussion किया ना, 14 points. These all 14 points were undamped SHM. We have only a basic idea of damped SHM, and you will be continuing the whole concept in engineering. So ये जो damped SHM है is only a basic idea in our portion. We don't have the derivation, nothing. We just need the idea, and the next continuation in the first year of engineering we'll be doing. You all will be doing with damped SHM. Damped SHM में क्या होता है? जो practically possible है कि amplitude हर एक चीज का कम होता रहता है. हेलो, आपको पता ही है ना? Okay, if you swing, if you sit on a swing in a garden and you don't apply any external force over here, so the amplitude of the swing will become lesser and lesser and lesser, and finally it will stop, na beta? When I say amplitude is varying, and the formula for amplitude is A is equal to A naught e raised to minus bt by 2n. Either refer, what is A naught is the initial amplitude. या तो इसको भी A naught पकड़ता है, this is A naught. A naught ही है. A naught घटता जाता है यहाँ पर. अच्छा, यहाँ का ओमेगा was, you remember it was k by m. यहाँ पर ओमेगा is not ओमेगा, ओमेगा को लिखते हैं, ओमेगा जो है is under root k by m minus b by 2m the whole square. ये प्लीज रट्टा मार लेना इसको, because derivation हमारे पोर्शन में नहीं है. Okay, that will be including the differential equation. तो आपको engineering में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा ये सब चीजें. Okay, I hope this was the case. Okay, and इसका equation जैसे था x is, इसका equation was x is a sin omega t plus delta. अभी वही equation था, x is a, but a यहाँ पर ये रहेगा sin omega, इसका ये रहेगा plus delta. Remember this. You just need to learn by heart all these things. इसमें कोई proof आपको आने वाला नहीं है, but sums आते हैं इसके basis पर. So I'll teach you how to deal with the sums. बाकी आपको ये जो damped SHM है उसको याद ही करना है. So it is only 7:40. We can start with our sums of some part at least. But I hope you all have understood everything. Hello. Yes, sir. So we'll start with our solving part, and then if you have any doubts or anything, you can just. I'm going very slow today. कोई issue नहीं है. Okay. Question number
10 पर आते हैं सबसे पहले। Okay, listen to me. As we have discussed all the formulas, आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए. If you have any doubt or anything, you all can ask me. But शुरू करते हैं. Let's start. A body of mass 0.2 kg. Hello, can you see the green slide? Please. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay, ठीक है बेटा. So कुछ couple of sums करते हैं हम लोग, देखते हैं. सब तो complete नहीं होगा. We'll see. Mass is 0.2 kg performing linear simple harmonic motion. It experiences a restoring force of 0.2 Newton when the displacement from the mean position x is given as 4 centimeter. That is 10 to the minus 2. What is the force constant? That is k निकालना है. Second one, time period of SHM find करना है. Acceleration in SHM when the body is at a distance of 1 centimeter. Straight forward sums. चलो k कैसे find करेंगे? Come on यार, please. You all know it. चलो, anyone please reply. Come on बेटा. k कैसे find करेंगे? Which formula? Square is equal to minus k. F is equal k. F is equal to minus kx. Hello. You have to look at the data which is given. Yes, f is minus kx. Very good. So ये हो जाएगा 0.2. Magnitude ही लेना है तो we neglect the minus sign. We just are interested in the magnitude of fr. Yeah. So k, I don't know. X is 4 into 10 raised to minus. तो k का वैल्यू यहाँ से आपको आएगा 5 न्यूटन पर मीटर. This is the first point. Simple. Second. Time period. Now, can you tell me how to find time period? Now, if you remember, omega was root k by m. Hello? Please say yes or no. Omega is root k by m. Phi by m कितना है? 0.2. ये ओमेगा मिल गया. हेलो, मिला कि नहीं? Yes, sir. So what is time period? 2 pi by omega. So it will become 2 pi by omega. Omega की जगह ये opposite हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 by 5. Okay. So this will become 2 pi by. Okay. ये हो जाएगा 2 by 5, that is 0.4. तो 0.004 हो जाएगा. 4 into 10 raised to क्या हो जाएगा यार ये? 2 into 10 raised to minus 1 by 5, that is 0.4. तो 4 into 10 is to minus 2. that will become ये 2 बाहर आ गया तो ये हो जाएगा 4 pi into 10 is to minus 1. That is 0.4 pi seconds. Hello? Do you agree with me? Yes or no, sir? Question number 3. Acceleration is minus omega square x, but we are again interested in the magnitude. तो omega square x only. तो omega हमको यहाँ से मिल गया ये. इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 by 0.2 into x is 4 into 10 is to minus 2. This answer will come. Magnitude will be 1 meter per second square. But if I need with a sign, it is minus 1 meter per second square. That is all okay. So I hope you all have understood the whole concept of hello. Are you all there, right? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा. थोड़ा question number 12. Question number 12th question देखते हैं. A particle performs simple harmonic motion with a time period of 4 seconds. Amplitude is given as 4 centimeter. Initially, the particle is there at positive extreme. मतलब particle कहाँ पर है? Particle यहाँ पर नहीं है.
पार्टिकल यहां पर है, बराबर है? आप क्या कह रहे हैं? मतलब क्या मैं कह सकता हूँ टाइम 0 पर पार्टिकल यहां पर है, यहां जाने की कोशिश करेगा। जब पार्टिकल यहां से शुरू होगा तो उसका डेल्टा हो जाएगा π/2 इनिशियल फेज। डू यू अग्री? हेलो, द Yes, sir. इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल इज π/2। हाउ मच टाइम विल इट टेक? हाउ मच टाइम विल इट टेक हमको फाइंड करना है, छोटा टी, इंस्टेंटेनियस टाइम कितना लगेगा उसको टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना। कैन आई से एम्पलीट्यूड इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर, पूरा 4 सेंटीमीटर। उसने यहां से शुरू किया और उसको जाना है 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, मतलब कुछ समय बाद वो समय फाइंड करना है। वो यहां पर रहेगा कितना सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सट्रीमिटी? हेलो, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सट्रीमिटी। डू यू अग्री? डू यू अग्री बेटा? क्वेश्चन समझा आपको? Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रेदर देन द आंसर। ये हमारा लेफ्ट एक्सट्रीम है। अच्छा, इज द डेटा मेंशनिंग टाइम? देखो टाइम टाइम, तो आई विल यूज टाइम इक्वेशंस। व्हिच इक्वेशंस विल आई यूज? हेलो, टाइम इक्वेशंस। आपने ये इक्वेशन सुना है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा? हेलो, प्लीज से यस और नो। Yes, हेलो, sir. Yes, sir. हाउ मच इज a? चलो इधर इधर टर्म्स बताओ। चलो a कितना है क्वेश्चन में? प्लीज 4. रिप्लाई। 4 है। डेल्टा कितना है क्वेश्चन में? हेलो, डेल्टा कितना है क्वेश्चन में? डेल्टा डेल्टा डेल्टा, कम ऑन। I/2. π/2। वेरी गुड। अच्छा, ओमेगा भी मिल जाएगा। यू नो व्हाट इज ओमेगा स्टैंड फॉर? 2π/t। टाइम पीरियड इज 4, so it will become π/2 also। तो ओमेगा भी मिल जाएगा रेडियन पर सेकंड में, that is angular frequency also I have got। Can anyone tell me how much is x? Come on, please reply. It will be a very beautiful question. How much is x? X is the displacement of the particle. How much is the displacement of the particle at time t? हाँ बेटा, please reply. 3 centimeter. 3 centimeter. Why did you say 3 centimeter? Displacement is measured from the origin. 4 minus Displacement is always measured from the mean position. This statement plays a very very important role. Displacement कुछ लोग 1 ले लेंगे, that is wrong. Displacement is measured from which position? Hello, यार बोलो, from which position? Mean position is very very important statement. तो डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा, दैट इज x इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ से हमको यहां से जाओ या किधर से भी जाओ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा यहां से मेजर होगा ये। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 3 है, ये यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। साइन ओमेगा इज π/2t प्लस π/2। डू यू अग्री? हेलो, डू यू अग्री बेटा? हाँ ना बोलो। Yes, sir. बेटा अभी टाइम हो जाएगा थोड़ा, तो प्लीज बी विथ मी, एटलीस्ट वी कुड सॉल्व 5-6 क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। ये हो गया 3/4। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज sin ओमेगा t प्लस π/2? मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा रहेगा, sin ओमेगा t प्लस π/2 इज cos ओमेगा t। हेलो, हेलो, इसको मैं लिख सकता हूँ वैसे? बेटा लिख सकता हूँ वैसे? हेलो Yes, sir. यार, sin ओमेगा t प्लस π/2 इज व्हाट सर? cos ओमेगा t। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन अभी मिल गया मुझे। सो दिस विल बी π/2t
is cos inverse of 3/4. कैलकुलेटर से अगर आप cos inverse of 3/4 निकालेंगे, ओके, मोबाइल को सीधा करके, you know how to do it, right? It will become 41.4 degree. It will be pi by 2 into t. अच्छा, ये चीज रेडियन में है, देखो ये चीज, और ये चीज डिग्री में है, ये आपको कैलकुलेटर में डिग्री में मिलेगा. दिस इज इन डिग्री. हाउ टू डू नाउ? व्हाट टू डू? हेलो हेलो. मल्टीप्लाई पाई बाय 180. या तो इसको 90 लिख दो, या तो इसको 90 लिख दो, ये भी चलेगा ना, इसको भी 90 लिख सकता हूँ ना मैं. हेलो लिख सकता हूँ, Yes, नहीं लिख sir. सकता हूँ, ये भी चलेगा. अब कुछ भी करके आंसर तो लाना ही है. getting it? 0.46. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. या तो आप उस तरीके से उसको रेडियन में भी कर सकते हो, कुछ भी चलेगा. दोनों का, दोनों साइड का यूनिट सेम होना चाहिए. Now this is a 4-mark numerical. I hope you all have understood everything. Hello? Hello? Yes or no? Yes, sir. So that will be the case. 12th question is done. Question number 13 पर आता है. Look carefully. A particle is performing linear SHM with a time period of 6 seconds. Is at the positive extremity. क्या समझ आता है बेटा? पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी मतलब उसका डेल्टा कितना है? हेलो, 5/2. एक एक स्टेटमेंट को पढ़ो और उसको डाइजेस्ट करो बेटा. एट टाइम जीरो, टाइम जीरो मतलब जब वो स्टार्ट हुआ तो डेल्टा उतना ही रहेगा ना, बिकॉज दिस इज इनिशियल फेज ओनली ना. द पार्टिकल इज टू बी फाउंड एट अ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोजिशन एट टाइम 7 सेकेंड्स. देखो हम लोग इसको थोड़ा पिक्टोरियल व्यू में वो कर लेते हैं. ये x0 है, ये x प्लस a है, एंड ऐसे टाइम जीरो पर पार्टिकल इधर है और ऐसे जा रहा है. कह रहा है 60 सेकेंड बाद पार्टिकल इधर आ गया 3 सेंटीमीटर यहां से. So can anyone tell me how much is x? How much is the displacement of the particle? Come on, अभी सिखाया मैंने. Please reply. A minus 3. Perfect man. This is a ना. a का वैल्यू तो मालूम ही नहीं है क्योंकि a तो पूछा है ना, अगर आप पढ़ेंगे पूरा तो. So this displacement x is a minus 3. Same concept. Because displacement is measured from the mean position. ये statement पे बहुत ज्यादा stress करना है हमको. ओके, फाइंड द एम्पलीट्यूड. ओके ठीक है. तो यहाँ पर टाइम के बारे में ही कह रहा है, तो हम लोगों को टाइम इक्वेशंस ही इस्तेमाल करना है. वी नो दैट x विल बी a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा. x को लिखेंगे बेटा a minus 3 is a sin ओमेगा को लिख सकता हूँ 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t एंड डेल्टा इज 5/2. Can I cite this? A minus 3 is equal to A. Sin का ये cos बन जाएगा. Cos 2 pi by capital T is 6 into G. Yes or no? ये हो जाएगा A minus 3 upon A is equal to cos. कितना हो गया भाई? 2 pi by 6 into छोटा t भी दिया हुआ है, देखो 7 seconds. 2 3 is 6. So it will become A minus 3 by A cos of 7 pi by 3. Pi को 180 लेते हैं by. हेलो, yes or no? हेलो. तो a minus 3 upon a is cos of 420.
मैथमेटिक्स में आता है cos 420 कितना होता है? हेलो, कम ऑन मैथमेटिशियन पीपल, half. cos 420 हाफ है. इसको अगर आप 360, हेलो, 360 plus 60 ना, so will come in the first quadrant. हेलो यार, इतना तो आता रहेगा ना, कम ऑन यार, इतना तो मत वो करो, है? Yes or no? Yes, sir. This answer will be half. So a minus 3 upon a will become equal to half. यहां से आप a क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेना, a का वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर आ जाएगा. This is again 4 marks category question. I hope you all are understanding. And one good news is there for the theory people के इसके बाहर से कुछ आता ही नहीं है. Whatever there in the government textbook, they will ask you ditto, and that also the easy parts of that thing. Because every year यही होता आ रहा है. Okay, they don't want to burden you with different things and everything. Yeah, JE people will have to refer some extra material, NEET people will have to, but जो theory वाले हैं, HSC वाले हैं, उनके लिए the Bible is the digest only or the government textbook which is there, and that also you have to do the star marked numericals also. ज्यादा कुछ वो नहीं है. Okay. Stick to the syllabus and do it. That is the main thing which I am telling you. And JE वालों के लिए भी you stick to DC Pandey and do it properly. Do it 2 times, 3 times, 4 times the DC Pandey thing. Because आपको वो चीज पक्का होना चाहिए. On the basis of that, you will be able to solve other sums also. Okay, the techniques are very, very important to study. Question number 17 पर आता है. 17. Okay, we'll see क्या दिया हुआ. Okay, we have 7, 8 o'clock हो चुका है. 2-3 सम और करता है, and then okay, we can meet on Wednesday and complete this whole thing. Okay. At what distance from the mean position? At what distance? मतलब x, he is asking you. The speed of the particle is half of the maximum speed. So data क्या दिया हुआ है? What is given that the speed of the particle is half of x. Okay, distance पूछ रहा है यहाँ पर. So we have to use displacement equation. Time equation हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. Because he is asking you about x ना. V का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ओमेगा अंडर रूट a square minus x square is V general. Half of V max you know is omega a. यहाँ पर ओमेगा ओमेगा कट जाएगा. Can I square both sides? Will become a square minus x square is equal to a square by 4. So this whole concept is going to become x square is equal to a square minus a square will become 3a square by 4. So x will become root 3 by 2 plus minus root 3 by 2 times a. ये मिल गया. अच्छा, एम्पलीट्यूड दिया कितना है? पाथ लेंथ इज गिवन एज 10. पाथ लेंथ मींस 2a. पूरे रास्ते का जो लेंथ है, यहाँ से a होता है आपको पता है, एंड यहाँ से a होता है आपको ये भी पता है. तो ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया. तो कैन आई से 2a. जब भी पाथ लेंथ के बारे में बोलेगा ना, पाथ लेंथ इज ऑलवेज 2a, 10 सेंटीमीटर. तो एम्पलीट्यूड इज गोना बिकम 5 सेंटीमीटर. So x will be plus minus root 3 by 2 times of 5 centimeter. So that we know how to calculation, and you can do the calculation in terms of x. Okay, root 3 by 2 का actual value होता है 0.866 into 5. कर सकते हो ना? हेलो बेटा, yes or no? Hello, Baba, tell me. Yes, sir. This was a 2 marks numerical, nothing much. 2 marks numerical based on displacement equation. देखो ज्यादातर playing will only be done between time and displacement equation. Maximum questions in your boards come with either displacement equation or time equation. एकदम पॉलिश पढ़ाई करनी है आपको, एकदम लिमिटेड कंटेंट है आपके पास,
एंड उसी को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है. ओके पॉइंट नंबर 19 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 इज ठीक है 19 पर आता है. 18th is the same type which is again star marked. तो आप लोग कर सकते हैं. 18th I have not selected, so 18th you all can do it for homework. 19 करते हैं and if time is there then we'll do 20 also. हाँ 8 बजे ठीक है. We'll see 20 तक करते हैं हम लोग and then next time से we'll start with our other things. But my request is there to everyone कि भाई थोड़ा पढ़ाई किया करो. Okay, exam sincerely दिया करो. I know there is no watch on you all, so प्लीज थोड़ा सी ध्यान रखा करो. एग्जाम में तो वॉच तो होगा ही ना आपके ऊपर. क्वेश्चन नंबर 19. At what distance from the mean position is kinetic energy? At what distance? Again, we have to use distance. Is kinetic energy 3 times of potential energy? This is given. ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है. काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. 3 times of half k. Half k cancel. A square minus x square is 3a square. So 2. I'm very sorry, क्या हो रहा है यहाँ पर? मिस्टेक हो गया क्या? Kinetic energy is 3 times of potential energy. Getting it? Hello? बाबा सही तो है? ये x square हो जाएगा. I'm very sorry, यहाँ पर मिस्टेक हो गया मेरे से. ये potential energy is not a square. Formula is x square. Sorry. That is totally wrong. ये क्या हो जाएगा? 4x square is equal to a square. So x will become a by 2 plus minus. And amplitude is given as 8 cm. देखो दिया हुआ. Plus minus 4 cm. Do you agree? Hello? Hello? Yes or no? Yes, sir. Okay. So this was all the basic formulas which are there. 1 2 sums more and okay. I will not disturb you a lot. अभी वेकेशन से आप बाहर आए हो. College has started. Hello? No, sir. Then कभी start होगा कुछ पता है क्या आप लोग को? Today. Practical. Sir, orientation is done today. College is starting. Okay, orientation is there and then okay fine. Practicals के बारे में कुछ भी नहीं है ना? Sir, today college is starting. So they will tell you, na? So you can please share the information with me. Yes. So okay, so कभी practicals है because they will start with lectures only, I think so. Lecture तो ठीक है, यहाँ पर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है, तो you all can, there is no much issue about attendance of the college. That is all okay. Practicals होगा तो attendance का थोड़ा बराबर से attend करना बेटा. Practicals are important. Lectures तो यहाँ पर भी हो रहा है और completely we have generally 95% of the portion of 11th is over only. Okay, एक दो chapters बाकी है, that also will be done in this month only. Start करेंगे हम लोग. Question number 20 पर आता है. A particle performing linear SHM has time period of 2 pi seconds. Is observed to have a speed of b root 3 meter per second. So v is given as b root 3 meter per second. ये दिया हुआ है. Which is at a distance of b meters from O. Okay. So displacement कितना है from the mean position? b meters. Are you there? b meter. बराबर है ना? Hello? From O. Where O is the mean position. दिया हुआ है देखो, mean position is O. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि
ये ऐसे है, ये O है, दैट इज द मीन पोजीशन। पार्टिकल यहां पर है, ओके, एंड उसका स्पीड इधर है, कितना स्पीड है, b√3 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन b। इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम O, देखो इट इज मूविंग अवे फ्रॉम O, वही कह रहा है वो, मूविंग अवे फ्रॉम O टुवर्ड्स द राइट एक्सट्रीम जा रहा है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल फर्दर b, ओके, और कह रहा है टाइम पीरियड जो है 2 पाई सेकेंड्स है। कह रहा है और बी अगर उसको ट्रैवल करना है, और बी सपोज इधर किधर ट्रैवल करना है, आई डोंट नो, ये यहां से यहां तक, ये दिख रहा है, और बी, ये टाइम निकालना है, यहां से यहां तक का हमको क्या निकालना है, कितना टाइम समय लगा उसको और फर्दर भी ट्रैवल करने के लिए। हेलो हेलो, डिड यू गेट इट? हाँ ना बोलो बेटा, तो आगे बढ़ेंगे। हेलो, किसी को नहीं समझा? प्लीज से यस और नो सो आई कैन गो फर्दर। Can you repeat diagram? Okay, see, I'll do the diagram again. देखो इधर, बेटा एक बात मुझे आप बताओ कि पार्टिकल का मीन पोजीशन कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया है? हेलो, देखो इधर, दिस इज द मीन पोजीशन। हेलो, डू यू एग्री? क्वेश्चन कह रहा Yes. है पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड इज 2 पाई सेकंड्स, about the mean position is observed to have a speed of b√3 when it is at a distance of b meter. So जब वो distance b मीटर पे था, इधर था, उसका स्पीड कितना था, b√3 मीटर पर सेकंड when it was here. If the particle is moving away from the mean position, ये भी कह रहा है moving away, देखो दूर जा रहा है mean position से। Find the time required by the particle to travel a further distance b, मतलब और distance उसको b travel करना है, b travel करके वो इधर से इधर आ जाएगा। कह रहा है यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा। हेलो, डिड यू गेट इट? हेलो, और b डिस्टेंस Yes. ट्रैवल करने के लिए कितना समय लगा? गेटिंग इट? हेलो, गेटिंग इट और नॉट? हेलो, Yes. ठीक है, अब मेरी बात सुनो, सब लोग मेरी बात सुनो, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, जस्ट पे अटेंशन, लास्ट क्वेश्चन विल बी डूइंग दिस थिंग एंड देन ओके यू कैन फिनिश। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले मैं एम्पलीट्यूड फाइंड करूंगा। यू नो v का जनरल फॉर्मूला इज ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। व्हाट इज v गिवन? व्हाट इज v गिवन? कम ऑन हेल्प मी आउट प्लीज। v कितना दिया हुआ है v? हेलो यार, ऐसे मत करो प्लीज, टेल मी। 2, 3. b√3 इज गिवन राइट। ओमेगा को लिख सकते हैं बेटा 2 पाई बाय कैपिटल टी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड x इज गिवन एज b ना, दिस इज x ना। हेलो हेलो, जब x b है तो ही तो v ये है ना। when x is b then only v is this ना, x is b Yes. square। can I square both sides? ये हो जाएगा 3b square, 2 pi by t is also 2 pi a square minus b square, और इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर किया ना दोनों साइड पे। हेलो हेलो, कम ऑन यार, लास्ट समय प्लीज। Yes, sir. 3b स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। can I say a square will become equal to 4b square? So a will become what? Hello, a will become what? A will become what? Come on fast. Plus minus. Plus minus 2b. 2b, मतलब amplitude this side will be 2b। क्या कह रहा हूं मैं? हेलो, that side will be minus 2b. Do you agree? Do you agree?
Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करो कि बी ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है। देखो बी, ये वैल्यू 2b है पूरा, मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम तक वैल्यू 2b है। बी ऑलरेडी वो इतना ट्रैवल कर चुका है, तो कहना इसे और भी ट्रैवल करने के लिए इट विल रीच द राइट एक्सट्रीम, और ये टाइम मांग रहा है। हेलो, यस और नो? Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड द डेटा बाबा, यस और नो? Yes, sir. थोड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड, ओके। एंड ये चीजें जो है न्यूमेरिकल्स की चीजें, वो वीडियोस में मौजूद नहीं है। इट इज नॉट देयर इन द वेबसाइट बिकॉज इट इज न्यू सिलेबस, ओके। तो जैसे अभी रिकॉर्ड होगा वैसे आई पुट इट ऑन द वेबसाइट, बट जो जितने वीडियोस है वेबसाइट पे दे आर अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिलेबस। तो उसके अंदर जनरली न्यूमेरिकल्स जो रहेंगे वो पुराने वाले रहेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे न्यूमेरिकल्स हम लोग नए ऐड करते जाएंगे, ओके। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखो बेटा, एक चीज का ध्यान रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ दिस आई विल डील विद यू। ये मीन है, दिस इज राइट एक्सट्रीम, दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम। ध्यान देना, ध्यान दो, हाँ सब लोगों को। मीन से राइट एक्सट्रीम जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? t/4। हेलो, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? t/4, because one oscillation means what? One oscillation means going, coming, going, coming। तो उसमें टाइम पीरियड t होगा ना, टोटल टाइम घूमने का कितना होगा? 4 बार t होगा, तो सिर्फ एक बार घूमने का टाइम कितना रहेगा? t/4। 4. हेलो, t/4 मतलब x0 से अगर आपको xa पर जाना है, कितना टाइम लगेगा? कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा बेटा? हेलो, T/4. t/4। देखो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, एक ट्रिक सिखाता हूँ। इस चीज का एंगल कितना होता है? 0। इसका एंगल कितना होता है? हेलो, इसका एंगल कितना होता है? अभी एंगल के टर्म्स में मैंने पढ़ा, कितना होगा? कितना होगा? 90 होगा ना? हेलो 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 हेलो, Yes, गेटिंग sir. इट? मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, अगर आप समझ सकते हैं, अगर आप तो बहुत होशियार है, तो एवरीवन विल अंडरस्टैंड। कैन आई से, अगर मैं रेफरेंस सर्कल मेथड से इसको कंपेयर करूं, तो क्या मैं कह सकता हूँ 360 डिग्री को लगेगा टाइम t, 90 डिग्री को कितना टाइम लगेगा? कम ऑन, अरे भाई t/4 ही लगेगा ना? हेलो Yes, sir. बाबा, समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? हेलो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात सुनो सब लोग। अभी मुझे यहाँ से यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है, सपोज इधर ध्यान देना, a/2 पर मुझे जाना है, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, सब लोग मेरे साथ में रहना। a/2 का कोएफिशिएंट क्या है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ a/2? कम ऑन यार, a/2 का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट पता है कोएफिशिएंट क्या होता है? Half. हाफ होता है। हाफ होता है कि नहीं होता है? व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ +a? 1. 1। आपको साइन टेबल आता है? साइन टेबल, हेलो, विच टेबल यू नो? आता है सबको? हेलो, Yes, sir. व्हाट इज साइन? साइन ऑफ हाउ मच इज 1? साइन ऑफ हाउ मच इज 1? ए भाई प्लीज, 5/2। मतलब कहना ही से, अगर इधर का कोएफिशिएंट 1 है और अगर मैं साइन टेबल चलाऊं यहाँ पर, तो वी नो दैट एक्सट्रीम पोजीशन पे थीटा कितना रहेगा? 90 रहेगा। हेलो, रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा, कोई बता सकता है इसका कोएफिशिएंट कितना है? जल्दी 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 जल्दी। हेलो, हाफ। Half. तो इसका एंगल कितना रहेगा? साइन ऑफ हाउ मच इज हाफ? साइन ऑफ हाउ मच इज हाफ? 30. 30 डिग्री, सही है क्या? हेलो हेलो, थोड़ा अच्छा वाला ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक है, जिसके कारण आप ऑसिलेशन के बहुत सारे सम्स ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। कोई बता सकता है 30 डिग्री के लिए कितना टाइम लगेगा? अगर 360 को लगता है t, तो 30 को कितना लगेगा? T/12. t/12 ना, 30 12 जा 360 होता है ना बेटा? हेलो, Yeah. अरे Yeah. भाई सब लोग होशियार है यार, ऐसे मत करो। हेलो,
तो इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना है, कितना है, कितना है, T टी T बाय by 12. 12। तो कोई बता सकता है यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना रहेगा? टोटल टाइम इज T/4, उसमें से T/12 माइनस करेंगे तो वही आंसर आएगा ना इधर। तो कैन आई से दिस इज नथिंग बट व्हाट T/4 माइनस T/12। हेलो 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 बोलो, यस और नो। हेलो यार, पूरा टाइम लगा T/4, उसमें से T/12 रहेगा तो दिस विल बिकम व्हाट, T/6 ना। हेलो हेलो, या तो ऐसे भी सोच सकते हैं, देखो 30 डिग्री कवर हो चुका है, कितना और डिग्री कवर होना है, यहां से यहां तक और कितना डिग्री कवर होना है? अरे भाई 90 पे पहुंचना है ना आपको, 30 पे पहुंच चुके हो, 60. कितना 60, तो 60 को कितना टाइम लगेगा? हेलो हेलो, यस और नो। Yes, sir. अगर आपको नहीं समझता है, ये जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन इन डीसी पांडे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जो लोगों को नहीं समझता है ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट 0 से लेके आधा तक, 0 से लेके a/2 तक टाइम लगता है T/12, और आधा से पूरा टाइम लगेगा T/6। इट इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन। हेलो हेलो, Yes, sir. ये याद रखना बाबा प्लीज। ओके, इस मेथड को कहते हैं रेफरेंस सर्कल मेथड विच इज अ शॉर्टकट। तो हमको यहां पर रेप्लिकेट करना है, वही चीज को हमको यहां पर रेप्लिकेट करना है। आप देखो ये 0 है, ओके, ये x0 है। एक मिनट, एक मिनट, एक, what is happening? हम्म, हम्म। Can you see the screen? हेलो, Yes, sir. दिख रहा है आपको? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मुझे पता है कि ये एम्पलीट्यूड है, देखो, तो अगर एम्पलीट्यूड 2 भी है तो ये आधा एम्पलीट्यूड हुआ कि नहीं? हेलो, हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? तो ये और आधा एम्पलीट्यूड है ना। कैन एनीवन टेल मी ये समय कितना रहेगा? जल्दी जल्दी बोलो, सेम रेप्लिकेशन है ना यहाँ पर। अगर ये बी है और ये बी है और ये 2 बी है तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक? जल्दी बोलो, T/6 ना। हेलो हेलो, हाँ ना बोलो बेटा, यस और नो? Yes, sir. बिकॉज ही इज ऑलरेडी रीच्ड हाफ वे से उसको एक्सट्रीम जाने का टाइम पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, एंड दैट वी हैव लर्नड इट राइट नाउ दैट 0 से बीच में होता है T/12 एंड बीच में से आखिर तक होता है T/6। ये T/6 है, यस और नो? दिख रहा है आपको स्लाइड? हेलो, कैन यू सी Yes, द sir. स्लाइड? तो T/6 हमको निकालना है। तो T/6 कितना रहेगा? पीछे जा रहा हूं मैं फिर से, T/6 कितना है? ये T है, we need T/6, that is 2π/6, that will become pi/3 seconds. This is the what, sir? Okay, so if you don't remember, don't like that concept or something like that, okay, so आप सीधा सीधा याद कर सकते हो कि 0 से लेके +a तक टाइम लगेगा T/4, 0 से लेके बीच में तक टाइम लगेगा T/12, एंड बीच में से लेके आखिर तक टाइम लगेगा T/6। डिड यू गेट इट? हेलो हेलो, लर्न बाय हार्ट। जिन लोगों को एंगल समझ गया है दैट इज वेरी मच बेटर, आई विल बी डूइंग दैट इन द जेई। एक्चुअली ये जेई का कॉन्सेप्ट था, शॉर्टकट था, व्हिच आई वाज अबाउट टू टीच यू ओवर हियर, ओके। बट अगर
ओके, इतना जरूरत अभी थियरी में नहीं है, यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट, ये कॉन्सेप्ट हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग, इट इज ऑलरेडी 8:20। ठीक है, चलो वी मीट ऑन वेडनेसडे। थैंक यू वेरी मच। Bye sir. Bye sir. बाय सर, थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर।